So we are discussing Sir Francis Bacon, who was a famous essay writer. So Bacon happens to be a person who is not only a writer, but also a mathematician, a politician, a skilled statesman, a very cunning person, materialistic person, and a pragmatic person. And he's all over admired for his worldly wisdom. So he happens to be the man of Renaissance, a true man of Renaissance. Like, uski life ke andar we find ke whatever he did, whatever he wrote, all was there to get the worldly success. इसकी अपनी लाइफ में भी ये था, he got success using influences, using bribes, उसे बड़े high posts मिली, बड़ा एक rich, and he was born with a silver spoon, और उन corruption charges की वजह से इसको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ी. So he in his essays is altogether giving you the code to live a successful life. So Bacon is not concerned with the word hereafter. उसका बाद की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो उसके बारे में लिखता है. He only talks about the success you can get in this world, and through his essays, he gives you pragmatic approach and the approach which is full of wisdom, and he tells you how to get the worldly success. Francis Bacon and his timeline is in front of you. So in 1561 he was born, and in 1573 he went to Trinity College, Cambridge, and then Gray's Inn with his brother, he went there. He also travels with the ambassador to Paris. In 1579 his father's death leaves him penniless, so he begins a career in law, so he starts to practice it. By 1582 he was a barrister in Gray's Inn. In 1584 he took a seat in Parliament. So this seat was taking this seat, that included a lot of the use of influence or influential people. Afterwards we see that he has he begins to get a seat in 1593 in Parliament. So he becomes a Parliament member. So it was all, again, the use of his influence there in Parliament. He reached Parliament using his worldly wisdom that we were talking about. Then he starts his essays, which are published in 1597. And in 1601, this was a crucial year. So on Feb 8, Essex led a plot to kidnap the Queen in order to force her to dismiss his enemies from the court. The leaders were arrested, and Bacon was instrument all in declaring the Queen guilty, verdict at Essex trial. So Queen Elizabeth died in 1603, and then James I came. This was a golden time for Francis Bacon himself. He was named a trier of Gray's Inn, and then he became an attorney general, and then he was also made the Lord Keeper of the Seal, like his father was. It was an influential position. Then he publishes his works. In 1621 again comes the time he's charged with bribery and found guilty upon his own admission. Fined £40,000, sentenced to the Tower of London, which is a famous prison of that time. अब ये exhibition area है लोगों के लिए. So this was the time जहाँ पे इसका career collapse हुआ, और उसके बाद Bacon उसके बाद उस level तक ना पहुँच सका, and afterwards in 1626 he dies. So Bacon is famous for his essays. उसके जो essays हैं, they are about the pragmatic approach to life. Bacon के essays के बारे में कुछ बातें जो special हैं वो मैं discuss कर लूँ कि Bacon first of all talks about the worldly wisdom.
जो कि हमने ऑलरेडी शेयर किया, that he talks about how to get success in the world, how to be successful. So he tells you the judicious ways, the ways full of wisdom which can make or prolong your great career. He also talks about the worldly affairs and worldly success. Then he tells about, or his essays are called dispersed meditation. So dispersed meditation is a concept in which you are writing about one single topic. You are using different approaches towards it, but there is coherence, there is harmony. For example, Of Truth by Francis Bacon. First, in the beginning, he favors the lies, then he mixes lies and truth, and in the end of the essay, he's favoring the truth. So we are confused whether he was quoting truth or lies or mixture of it. So we are not sure, but we cannot say that this essay was not about truth. So it seems an apt essay for the same topic. So his essays are called dispersed meditation, that he discusses so many thoughts about the single topic and so many contrasting ideas too. Moreover, he is said to be the brightest, wisest and meanest of mankind. ये सबसे ज्यादा ज़हीन था, सबसे ज्यादा wise था और सबसे ज्यादा mean भी था, क्योंकि he wanted to get his influence claimed, done, prevailed, और वो उसको use करके इसने तरक्की की, बाद में पकड़ा गया. एक और इसके एसेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो चीज इसको मशहूर करती है, दैट इज बेकन्स राइटिंग स्टाइल. सो बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है, दैट इज वेरी पिथी, एपिग्रामेटिक, एंड दैट इज कॉल्ड द एफोरिस्टिक स्टाइल, APHORISTIC, एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन. सो बेकन इज नोन फॉर हिज दिस टेक्निक. इसके जो एसेज हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत छोटे हैं, मैक्सिमम लाइक 1 पेज ऐसे, लेकिन उस एक पेज में वो जिस तरह एक बड़े टॉपिक को कुछ वर्ड्स के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया कि मिनिमलिस्ट लिटरेचर में इन पोस्ट मॉडर्न टाइम में, तो एक ही इज अ मिनिमलिस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम, कि वो शॉर्ट वर्ड्स यूज करके और ऐसे अकवाले ज़री बयान करता था कि जिसकी एक एक इंटरप्रिटेशन पे आप थीसिस लिख सकते हैं. सो दिस इज हिज राइटिंग स्टाइल, कि उसकी जो राइटिंग्स हैं, देयर कोटेबल, हाईली कोटेबल राइटर था अपने टाइम का. उसकी राइटिंग्स को आज भी कोट किया जाता है और उसकी हर लाइन में हमें कोई एक एफोरिज्म मिलता है, अकवाले ज़री मिलता है, कोई विजडम या जुडिशियस बात नजर आती है. So ये उसके फेमस एसेज हैं, ऑफ ट्रूथ, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ सुपरस्टिशन, ऑफ स्टडीज ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ nobility and of death. I hope you have already gone through these essays. If not, you should. के इनको यहाँ पे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, हालांकि I would love to teach you this, the text of these essays. तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं. आपको it takes only 10 to 15 minutes to go through one essay if you're reading them for the first time. You will love his writing style. लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन essays को पढ़ा होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी जबरदस्त quotations हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं. Some quotations are here from Of Truth. So he says, but it is not only the difficulty and labor which men take in finding out the truth, nor again that when it is found, it imposeth upon man's thought, that doth bring lies in favor, but a natural though corrupt love of the lie itself. कि इंसान झूठ से मोहब्बत बिला वजह करता है, यानी उसके पास कोई रीजन नहीं है. एक रीजन हो सकती है कि जब आपने सच को ढूंढ लिया तो सच को मानना पड़ेगा. हजरत इब्राहिम को पता लग गया कि खुदा कौन है, तो खुदा की इबादत करनी पड़ेगी. तो ये, लेकिन ये रीजन नहीं है कि लोग झूठ को पसंद करते हैं. बेकन कह रहे हैं लोग झूठ को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि झूठ के अंदर ये इसकी करप्ट मोहब्बत है. इंसान झूठ को बिला वजह पसंद करता है. Then truth may perhaps come to the price of a pearl that showeth best by the day, but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle that showed best by varied lights. कि ट्रूथ जो है इतना
इसकी इंपॉर्टेंस तो जरूर है कि एक जितनी एक मोती की प्राइस होती है जो कि दिन की रोशनी में नजर आता है, लेकिन ये कभी उस झूठ की प्राइस तक नहीं पहुंच पाएगा जो कि डायमंड या कार्बंकल की तरह, जो कि वेरियड लाइट्स में नजर आता है। जैसे हम एक गोल्ड स्मिथ की शॉप पे देखते हैं कि बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें जो भी जेवर है बड़ा खूबसूरत नजर आता है। उस जेवर को आप सूरज की रोशनी में देखेंगे वो उतना खूबसूरत नजर नहीं आएगा जितना वो उन वेरियड लाइट्स में नजर आ रहा है। कैंडल लाइट डिनर्स वो भी इसी तरह कि वो बड़ा एक रोमांटिक माहौल बनता है। रीजन क्या है? बेसिकली वही चीजें, शक्लें आप दिन की रोशनी में देखें हम डर जाते हैं। सो दिस इज द थिंग के ट्रुथ को वो यहाँ पे कम तरजीह दे रहा है और झूठ की इंपॉर्टेंस का बता रहा है कि झूठ कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ही सेज अ मिक्सचर ऑफ अ lie doth ever add play here, कि अगर हम सच में थोड़ा सा झूठ ऐड कर दें तो काम बहुत खूबसूरत चलता है। अगर हम लोग हर वक्त सच बोलना शुरू कर दें तो हम में से हर बंदा रोज यानी मुख्तलिफ जगहों पे अपनी इज्जत से हाथ धो बैठे, लेकिन हम थोड़ा सा झूठ ऐड करते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे। आप लेट क्यों हो गए स्कूल से, उसमें झूठ है। आपने असाइनमेंट नहीं बनाई, उसमें झूठ है। आप आज यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं आए, उसमें झूठ है। तो हम थोड़ा बहुत झूठ ऐड करते हैं। Certainly it is heaven upon earth to have man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth, कि आप जो मर्जी कर लें आप इंसान को सच बोलने पे राजी नहीं कर सकते। Then he says the mixture of falsehood is like alloy in gold, a coin of gold and silver, which may make the metal work the better, but it embellisheth it. कि जो मिक्सचर है फॉल्सहुड का वो एक अलॉय की तरह है गोल्ड और सिल्वर में, जो कि उस जिसकी वजह से वो सिल्वर और गोल्ड जेवर की शक्ल तो ले लेता है लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है। अब ये कैसे होता है कि आपको पता है 24 कैरेट है प्योर गोल्ड और सिल्वर, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 24 कैरेट जेवर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हम उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। उसकी वजह से फिर वो बेस मटेरियल यानी वो जो 22 कैरेट गोल्ड और 2 कैरेट उसके अंदर इम्प्योरिटीज जब ऐड होती हैं तो वो फिर जेवर की शक्ल ले लेता है। अब इससे क्या हुआ, मेटल अब काम करना शुरू हो गया, अब उसने खूबसूरत सी शेप ले ली लेकिन उसकी वैल्यू तो कम हो गई, अब वो 24 कैरेट नहीं रहा। सो झूठ भी ऐसे ही है कि जब हम झूठ ऐड करते हैं तो उससे हमारा काम चल जाता है बड़ा खूबसूरत, लेकिन हमारी उस बात की बरकत खत्म हो जाती है। देन if it be vain to say that a man lies is as much to say that is brave towards God and coward towards man, कि इंसान जो झूठ बोलता है वो खुदा से नहीं डरता लेकिन लोगों से डरता है। For a lie faces God and shrinks from man, क्योंकि इंसान झूठ बोल के खुदा को तो यानी अपने एक हरीफ बना लेता है लेकिन इंसानों से डरता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक झूठा इंसान झूठ बोलता है दुनियावी फायदे के लिए, उसे खुदा का डर नहीं होता, तो वो इंसान से डरता है, खुदा से नहीं डरता। Then of great place he says that man in great place are thrice servants of sovereign estates, of fame, servants of business, के इंसान ऊंची प्लेस पे पहुंच के भी गुलाम ही रहता है। अब इमरान खान कहने को प्राइम मिनिस्टर होगा लेकिन उसके सारे शेड्यूल्स उसकी मर्जी से नहीं है, सब बुक हैं। वो हमारी तरह किसी रेडी पे खड़े होके गोलगप्पे नहीं खा सकता, ही इज बाउंड। तो लोग जो समझते हम ग्रेट पोजीशन ले लेंगे, इनफैक्ट वो आजाद नहीं हो रहे, वो कैद हो रहे। राइजिंग इनटू प्लेसेस लेबोरियस एंड बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स। ये आपके एग्जांपल है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से मास्टर्स कर लिया और ये था कि मास्टर्स, कभी हम सुनते थे मास्टर्स करके दुनिया यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हुई तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब हमें पता लगा कि हमने तो पीपीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए हम अभी तक बैठे कर रहे हैं। अब हमारे पास एक एम है लेक्चरर बनने का, एंड वी फाइंड कि वो हो गया तो हेवन है। जब हम उसमें आएंगे तो हमें पता लगेगा भाई ये तो एक बेस थी, अब हमें और आगे जाना है और मेहनत करनी है। सो बाय पेन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रेटर पेन्स, बाय इंडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज, कि लोगों ने रिश्वत दी, रिश्वत लेके एक मस्जिद को उसके इंचार्ज बन गए तो डिग्निटी मिल गई, या रिश्वत देके कोई एग्जाम पास कर लिया, बल्ले बल्ले हो गई। सो दिस इज कमिंग टू डिग्निटी थ्रू indignity. Then he says that it is a strange desire to seek power and lose liberty, or to seek power over others and to lose power over a man's self. कि बड़ी strange desire है इंसान की कि वो चाहता है कि उसे लोगों के ऊपर पावर मिले, लेकिन इनफैक्ट क्या होता है कि वो
अपने ऊपर से पावर खो देता है। मतलब मैं अगर एक ग्रेट प्लेस पे हूं तो मैं सारी टाइम पे ऑफिस का काम कर रहा हूं, सरकारी जॉब कर रहा हूं, लोग मेरे आगे पीछे हैं, मैं उन पे अपनी पावर यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपनी जात के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करने के बारे में ख्याल नहीं है, मुझे दीन की तरफ जाने का ख्याल नहीं है। Then he says avoid not only the fault but the suspicion, कि सिर्फ ये ना करो कि आपने रिश्वत देने वालों को मना कर दिया, बल्कि इसका शक भी ना होने दो कि लोगों को शक भी गुजरे कि आप रिश्वत लेते हो। तो सस्पिशन ज्यादा डेंजरस है। And then of superstitions, he says that atheism leaves a man to sense, to philosophy, to natural piety, to laws, to reputation, moral virtue, but superstition dismounts all these. तो सुपरस्टिशन में एथिज्म को कंपेयर कर रहा है कि एथिज्म जाहिर बात है गलत बात है, लेकिन बेकन कहता है एथिज्म एटलीस्ट सुपरस्टिशियसनेस से बेहतर है। कि मुझे पता लगा एक बंदा जो खुदा को नहीं मान रहा तो वो कोई तावीज भी नहीं ले रहा पास होने के लिए, और एक बच्चा है जिसने एग्जाम देने और उसने 6 तावीज बंधे हुए कि मैं एग्जाम दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। भाई वो आपकी मेहनत है, वो तावीज का काम नहीं होगा। दिस इज सुपरस्टिशियसनेस। सो लेकिन अगेन दिस इज बिलीव ऑफ एवरीवन। It were better to have no opinion of God at all than such opinion as is unworthy of him. कि हम खुदा के बारे में इससे बेहतर, यानी एथिज्म को फेवर करते हुए वो कहता है कि बजाय इसके कि हम खुदा के बारे में कोई माज़अल्लाह गलत ओपिनियन रखें, उससे बेहतर है कि हम खुदा के बारे में कोई ओपिनियन ना रखें। यानी ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम खुदा के बारे में गलत ओपिनियन रखें जिसमें अल्लाह माफी दे लोग बड़े कुफराना कलमात कह जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सुपरस्टिशियसनेस में इंसान बड़ी गलत किस्म की बातें कह जाता है, उससे बेहतर है एथिज्म। ऑफ स्टडीज बड़ा इसका फेमस ऐसे है जिसमें वो कहता है कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देन ही सेज टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। बहुत ज्यादा पढ़ाकू या किताबी कीड़ा होना वो भी गलत है, लेजी हो जाता है इंसान। उनको बहुत ज्यादा यूज करना इज अफेक्टेशन, बनावट है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। और उन अपनी तमाम तर लाइफ को बुक्स के हवाले से जज करना वो भी गलत है। यानी वो, और फिर वो कहता है कि क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। वो जो वाइज मैन है वो पढ़ाई को यूज करते हैं। बेसिकली एजुकेशन विदाउट ट्रेनिंग इज कर्स। Then he says some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. ये कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको सिर्फ आपको टेस्ट करना चाहिए कि आपने चेक कर लिया कि अच्छा ये चीज कैसी है, इसका टेस्ट कैसा, नहीं ये खाने वाली है, ये नहीं खाने वाली। अदर्स टू बी swallowed, कुछ ऐसी हैं जो जबरदस्ती पढ़नी पड़ती हैं। जिस तरह कोई दवाई आपने ले ली, हम डिस्प्रिन को लेके चुबा नहीं रहे होते, यार बड़ा मजा आया डिस्प्रिन खाने का, ये पेनाडोल का तो कमाली टेस्ट है, आप उन्हें swallow करते हैं कि भाई ये निकल जाए हमारे गले के अंदर से। एंड देन some few are to be chewed and digested, जैसे हमारा फेवरेट फूड पिज्जा, कि हम उसे खा रहे हैं, च्यू भी कर रहे हैं, डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। वो कह रहे कुछ किताबें ऐसी हैं कि सिर्फ सरफेस रीडिंग कर लो, कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में आपको जबरदस्ती पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कुछ किताबें वाकई ऐसी होती हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा पढ़ के मजा भी आता है और हम उन्हें याद भी रखते हैं। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट है। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, जब आप गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप उस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। और राइटिंग जब आप करेंगे देन यू आर अ जेन्युइन पर्सन, कि अब आप वाकई उस नॉलेज को यूज कर रहे हैं। हिस्ट्रीज मेक्स पोइट वाइज, पोइट्री poets witty, mathematical subtle. So then of parents and children, it says the joys of parents are secret and so are their griefs. कि जो वालिदैन की खुशियां होती हैं औलाद के हवाले से और जो गम होते हैं वो वही जानते हैं उसको, और ना बयान कर सकते हैं वो, ना वो अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून मोर बिटर। कि जो बच्चे हैं वो हमारी लेबर्स को स्वीटन करते हैं, कि मैं बाहर कहीं पे काम कर रहा हूँ, मजदूर हूँ, मैं उठा रहा हूँ और मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने 2 ईंटों की तगारियां मजीद उठा ली तो मैं अपने बच्चों को आज वो चीज खिलाने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा जिसकी वो बड़ी ख्वाहिश कर रहे थे। तो वो फिर मैं मोटिवेट हो जाऊंगा।
तो उनसे लेबर बड़ी स्वीटन हो जाती है। वालिदैन हमारे लिए मेहनत करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, उन्हें पता कि हम अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, तो जब वो औलाद का चेहरा उनके सामने आता है तो दे आर हैप्पी। लेकिन दे मेक मिसफॉर्चून मोर बेटर। अब मुझे चोट लगेगी तो दैट इज ओके विद मी, मेरी औलाद को अल्लाह माफी दे चोट लगेगी तो मेरी हर चीज के ऊपर पानी फिर जाएगा, मैं हर चीज को पीछे रख के सबसे पहले उस चीज को अटेंड करूंगा, तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। So the care of posterity is in more in them that have no posterity. वो लोग जिनकी औलाद नहीं होती वो इस चीज का ज्यादा ख्याल करते हैं, यानी they're more concerned about humanity, they're more concerned about people. वो ज्यादा philanthropist होते हैं। A wise son rejoices the father, but an ungracious son shames the mother. के एक wise son है तो बाप खुश होगा, लेकिन बच्चा अगर अच्छा ना निकला तो शर्मिंदगी माँ को होती है कि तरबियत का उसको कहा जाता है। ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में ही टॉक्स के द इलिबरलिटी ऑफ पेरेंट्स इन अलाउंस द चिल्ड्रन इज अ हार्मफुल एरर। क्या बच्चों को अगर अपने यानी पैसों पे रोकते हैं तो वो बड़ी गलत बात है, क्योंकि जब उनके पास फिर इस तरह पैसा ज्यादा आता है तो वो शाह खर्च बन जाते हैं, नादीदे बन जाते हैं और वो फिर पैसों को गलत यूज करते हैं। Of marriage and single life, कहता he that hath wife and children hath given hostages to fortune, कि जिसके पास बीवी बच्चे हैं उसने गोया अपनी तमाम तर उसकी जो फॉर्च्यून है वो हॉस्टेज हो गई। यानी मैं कोई भी काम करने से पहले सोचूंगा कि यार मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए, या मुझे आधी रात को बाहर नहीं फिरना चाहिए, या मुझे फॉर एग्जांपल अपना ख्याल रखना है क्योंकि मैं अपनी फैमिली का ख्याल रख पाऊंगा। एक कंवारा जो है उसके वो मनमोजी है, एक बाज की तरह कभी इधर उड़ता जा रहा है कभी वहां उड़ता जा रहा है। Certainly the best works and of greatest merit of the public have proceeded from unmarried or childless men। जो हमने पहले बात की कि ज्यादातर फलाह बहबूद के काम वो लोग करते हैं जो कि अनमैरिड है, चाइल्डलेस है, क्योंकि उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है, उन्होंने वो पैसा औलाद पे खर्चा भी नहीं होता, उन्हें बच्चों के पैम्पर की भी टेंशन नहीं होती, उन्हें उनकी फीसों की टेंशन नहीं होती, तो वो पैसा फिर ह्यूमैनिटी के ऊपर लगाते हैं। अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। अनमैरिड मैन सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आपके साथ बैठे रहेंगे। मैरिड मैन को 9 बजे फोन हो जाएगा बेगम का कि दही लेके घर आ जाओ। बेस्ट मास्टर्स हैं वो कि वो जहां पे काम करेंगे उन्हें किसी की टेंशन नहीं है, वो अपना रूल अपनाएंगे। बेस्ट सर्वेंट्स हैं कि वो जॉब पे उन्हें आप 6 बजे टाइम खत्म होता है आप 8 बजे तक बिठा लो, उनके घर में कौन से बच्चे रो रहे। बट नॉट ऑलवेज द बेस्ट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यानी एक मुलाजिम, तो मुलाजिम वो इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली फैमिली की। जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते। वाइव्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेस, कंपेनियंस फॉर द मिडिल एज एंड ओल्ड मेन्स नर्सेस, कि जो बीवियां हैं वो यंग एज में इंसान की बिलव्ड होती हैं, जब मिडिल एज होती है तो उसकी फ्रेंड होती हैं, उनके साथ राजो न्याज और सारे दुख दर्द में शरीक होती हैं। ओल्ड एज में इंसान की नर्स का रोल प्ले करती हैं। सो इसकी तमाम तर लाइंस जो हैं ये मैंने डिस्कस की, दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर कोटेबल। फिर ऑफ नोबिलिटी, फॉर नोबिलिटी अटेम्प्ट्स sovereignty and draws the eyes of people somewhat aside from the line royal। कि जो नोबिलिटी है बेसिकली उसका क्या रोल है कि नोबिलिटी एक दरमियाना तबका है बादशाह और अवाम के दरमियान। जब कोई गुस्सा आता है तो लोग डायरेक्ट बादशाह तक नहीं जाते, पहले नोबिलिटी को देखते हैं। जैसा फ्रेंच में पहले अरिस्टोक्रेट्स को पकड़ा, उसके बाद बादशाह की बारी आई। A numerous nobility causes poverty and inconvenience in a state। जब अरिस्टोक्रेट्स ज्यादा होंगे तो स्टेट में इनकन्वीनियंस पैदा होगी, क्योंकि आपने इन नोबल मैन का एक वजीफा लगाया होता है, जिसकी वजह से स्टेट का जो एक्सचेकर है वो खराब होता है। Of death, the last one. Men fear death as children fear to go in the dark, and that is natural fear in children is increased with the tale, so is others। अब डेथ क्या है बेसिकली? डेथ हमारे लिए एक सिग्निफाइड है। सिग्निफायर वो है कि हमने लोगों को मरते देखा, सिग्निफाइड वो जो कॉन्सेप्ट है कि वो क्या होगा हमने सिर्फ इमेजिन किया हुआ है।
तो इंसान डेथ से ऐसे डरता है जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। और बच्चों के लिए अंधेरे में जाना शुरू से नहीं होता, वो कहानियां सुन के उन्हें डर लगता है। तो इसी तरह हम मौत से भी कहानियां सुन के डर जाते हैं कि मौत ऐसी होती है, मौत वैसी होती है। डेथ ओपन्ड गेट टू गुड फेम एंड एक्सटिंग्विश्ड एनवी। एनवी उस जमाने में जेलसी को कहा जाता था कि डेथ जो है, डेथ से इंसान की अच्छी फेम के रास्ते खुलते हैं, जेलसी खत्म हो जाती है। कि आजकल हम सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का सुन रहे हैं, या कोई बंदा मरता है तो हम उसके बाद कहते हैं बड़ा अच्छा बंदा था। कई लोग हैं राइटर्स जिनके मरने के बाद उनके वर्क्स बड़े पब्लिश हो गए, फेमस हुए। कई एक्टर्स मरने के बाद ज्यादा मशहूर हो गए। सो डेथ जो है वो मरने के बाद इंसान को मशहूर कर देती है। कहते हैं उसकी याद आई उसके जाने के बाद, तो मौत के बाद इंसान की गुड फेम में इजाफा होता है और जेलसी खत्म हो जाती है। भाई एक मुर्दा से बंदा क्या जेलस होगा? बंदा ये तो कह नहीं सकता कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त कि यार मैं काम में बिजी हूं, ये बड़ा मजे से आराम कर रहा है, क्योंकि हम उससे जेलस नहीं होते। डेफिनेटली इज गॉन। So it is worth observing that there is no passion in man's mind so weak, but it mates and masters the fear of death, and therefore death is not such a terrible enemy when a man has so many attendants about him that can win the combat of him. कि डेथ से इंसान का डर तब खत्म हो जाता है जब उसके पास कुछ मेट्स यानी साथी आ जाते हैं, कुछ मास्टर्स जो कि उस इंसान के ऊपर काबू पा लेते हैं, तो इंसान का डेथ का फियर खत्म हो जाता है और डेथ इतनी टेरिबल नहीं लगती। मसलन वो कौन कौन से बात करता है कि अगर आपके रिवेंज आ गया आपके माइंड के अंदर, तो फिर आप भूल जाते हैं कि मुझे भी मौत आ सकती है, फिर आप लड़ने चले जाते हैं, बदला लेने। आपको अगर बहुत डर गए हैं तो आप अपने आप को मार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोग जिस तरह करते हैं। वो भी दुख है इंसान को बहुत ज्यादा, तो दुख एक ऐसा मास्टर है कि उसमें दुख में इंसान कुछ भी कर जाता है। पैट्रियोटिज्म है तो हम मैदान जंग में उतर जाते हैं। रिलीजन के लिए या इज्जत के लिए लड़ना है, हम मौत का ख्याल नहीं करते। तो ये वो वाले मेट्स हैं, दोस्त हैं, जिनको यूज करके हम डेथ से लड़ पड़ते हैं। सो दीज वर सम कोटेशंस फ्रॉम द वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, जो कि एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल किस्म का पर्सन और राइटर था।